जय श्री राम बच्चों and welcome to my YouTube channel Again Karo. Today we will discuss our next topic of the chapter polynomial, that is relationship between zeros and the coefficient of the polynomial. So for the previous lectures you can watch my previous videos. The link is in the description section. So now we will start our today's lecture, that is what relationship between zeros and the coefficient of the polynomial. As we know that linear polynomial. So we know the general formation of linear polynomial is ax plus b is equals to 0, and it has degree what? It has degree 1. That's why it has only 1 0, that is alpha, and the value of alpha is what? Minus b by a. In case of quadratic polynomial, its general formation is ax square plus bx plus c is equal to 0, and it has degree 2. That's why it has two zeros, that is alpha and beta, and we know that the sum of its zeros is always equals to what? Minus b by a, and the product of its zeros is always equals to what? E by a. And we also learned about that what? Cubic polynomial. हमने cubic polynomial में पढ़ा हुआ है. Its general formation is ax cube plus bx square plus cx plus d is equals to 0. And we know that alpha plus beta plus gamma, it has degree 3, so that's why it has 3 zeros, that is alpha, beta and gamma. And we know alpha plus beta plus gamma equals to what? Minus b by a. Alpha beta plus beta alpha plus alpha gamma is equals to what? E by a, and the product of its zeros is always equals to what? Minus d by a. So if you will look these boxes, then you will easily understand that alpha is what? 0, and b and a is what? These are the coefficient of that given information. Similarly, alpha beta is what? 0, and these are what? Coefficient of the given polynomial. Similarly, alpha beta and gamma are what? Zeros of the cubic polynomial, and b, a and c, these all are what? The coefficient. So these all are known as what? A term named as relationship between zeros and the coefficient of the polynomial. Now in that chapter, now in the next part, now we will discuss about how to find out the zeros of the polynomial. For this मैंने यहाँ पे कुछ questions पहले से लिख के रखे हुए हैं. See question number 1. Question number 1 is given as x square minus 2x minus 8 equals to 0. तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड्स का यूज कर हम सकते हैं. फर्स्ट वन इज व्हाट? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, दैट इज नोन एज फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकंड वन इज श्रीधराचार्य मेथड, दैट इज नोन एज आल्सो नोन एज फॉर्मूला मेथड. तो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट splitting the middle term method. Splitting the middle term method. देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, मुझे इस मिडिल टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना पड़ेगा कि मुझे वो जो दो नंबर मिलेंगे स्प्लिट होने के बाद उनका प्रोडक्ट जो है फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए. मतलब मुझे इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो हमें दो नंबर मिलेंगे उनको मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिले? इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल मिल जाए वैल्यू, और जब हम उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? ये वैल्यू सेम मिल जाएगी वापस. इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीपल क्या आ रहा है आपका? 8x स्क्वायर. हमने इसका कोफिशिएंट लिया 8 और इसका निकाला फैक्टर. 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा. So here the factors of 8 are 2 into 2 into 2 into 1. ये फैक्टर निकालने का मेन रीजन यही होता है कि आप जब फैक्टर निकाल लेते हैं, अब आप इन नंबर को कैसे ही मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर 8 आएगा. हमें आपसे क्या करना? कंबाइन करके देखना है कि किनको कंबाइन करने पर हमारा रिजल्ट जो है
वो -2x की इक्वल आ रहा है। देखिए अगर मैंने इसको कंबाइन किया तो मुझे क्या मिल रहा है 4, इसे कंबाइन करके मुझे क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। और अगर आप 4 को 2 से माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इफ यू विल सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 2 व्हाट यू विल गेट 4 फ्रॉम 2 एंड यू विल गेट व्हाट, मैंने क्या किया 4 फ्रॉम 2 मींस 2 से मैंने 4 को माइनस किया तो मुझे क्या मिल रहा है -2 मिल रहा है। इट मींस दैट आवर फैक्टर्स आर 2 एंड -4। तो आप इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन और इसमें कॉमन क्या आ रहा है x, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा x माइनस 4। इनमें कॉमन क्या आएगा 2, तो मुझे यहाँ मिलेगा क्या x माइनस 4। आपके पास में अगर आपने सही किया होगा तो आपको हमेशा ये वैल्यू जो है इक्वल मिलेगी। एंड देखिए हमने इसको फिर से इसको कॉमन निकाला तो मुझे क्या मिलेगा x माइनस 4 एंड x plus 2. Now compare these two terms with 0. X minus 4 equals to 0. You will get x equals to what? 4. And when you put x plus 2 equals to 0, then you will get what? X equals to minus 2. So this 4 is what? Alpha. And this minus 2 is what? Beta. So the zeros of that equation are alpha is 4 and beta is what? Minus 2. अंडरस्टैंड। नाउ अब हम इसे वेरीफाई करेंगे क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या, इसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है हमको। देखिए अब तो कैसे वेरीफाई करेंगे हमने ये पढ़ा हुआ है व्हाट दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो द सम ऑफ इट्स जीरोस ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट -b/a। हियर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 4, वैल्यू ऑफ बीटा इज -2 एंड माइनस b इज व्हाट, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो होगा क्या आपका a, मींस a इज 1, तो x के साथ वो होगा b एंड कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज c। So here the value of a is 1, b is -2, c is -8. Now put the values -b means -2 upon 1. So what you will get 4 plus minus minus, so you will get 2 and here also you will get what 2 means it is verified. Now हम प्रोडक्ट की टर्म में देखते हैं c/a, अल्फा इज व्हाट 4, बीटा इज व्हाट -2, c इज व्हाट -8 अपॉन 1, तो -8 इक्वल्स टू -8। देखिए यहाँ पे भी क्या होगा इक्वल आ रहा है, मतलब क्या है ये इट इज वेरीफाइड। अगर आपका ये वैल्यू सेम आ रहा है तो मतलब क्या है ये हमने सही किया हुआ है, इट इज वेरीफाइड। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से हम कोई एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो टी स्क्वायर माइनस 15। नाउ सी व्हाट यू विल गेट हियर। सपोज देखिए मुझे इसमें कंपैरिजन करना है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस √15 स्क्वायर, बिकॉज you know that whenever you square any root term then you will get what the value a. Now see a square minus b square, what is the formula of a square minus b square, it is a plus b and a minus b. So your answer will be t plus √15 and t minus √15. So now compare these term with 0, so you will get what t is equals to -√15 and here t minus √15 equals to 0, so you will get t is equals to √15. So this is what, this is alpha, this is what beta. Now you can verify it, जैसे हमने पहले जैसे किया वैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। Now see हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। देखिए अब यहाँ पर आपको ना ये सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है, ये 2 है फिर 1 है फिर 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या हम इसको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ हमें अब देखिए स्प्लिटिंग वाले हमें इस नंबर को ऐसे स्प्लिट करना है कि मुझे वो दो जो नंबर मिलेंगे उनका प्रोडक्ट जो होगा वो इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल, मींस 6 × 18, तो हमें 18 मिलना चाहिए। इसके हम क्या करेंगे 18 के फैक्टर निकालेंगे,
So 2 9s are 3 3s are 3 1. The factors are 2 into 3 into 3 into 1. देखिए हमने फैक्टर निकाला, मतलब क्या है, इनको मल्टीप्लाई कैसे भी करें आपको आंसर 18 मिलेगा ना। कंबाइन करके देखते हैं कैसे हमको आंसर 7 मिलना चाहिए, -7. नाउ सी 3 2 is 6, 3 1 is 3. If you will add 6 or 3, then you will get 9. Or if you will subtract 6 from 6 and 3, then you will get what, 3 or else -3. हमें लेके 7 चाहिए था, मतलब ये हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, नहीं जम सकता है। हमें क्या करना है, देखिए दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए, 3 2 is 6, 3 1 is 3, 6 एंड हमें क्या मिल रहा है 3, ये भी वही वैसे पहले वाला आ गया। और सी 3 3 is 9, 2 1 is 2, मीन्स 9 and 2. अगर आप 9 को 2 से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यू विल गेट व्हाट, 9 को 2 से सब्ट्रैक्ट, तो मुझे क्या मिलेगा -7 मिलेगा। मीन्स आई एम सेइंग दैट व्हाट, इफ यू विल सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 2, then you will get what, 2 minus 9 equals to what, -7. तो हमारे दो फैक्टर्स कौन से होंगे, 2 एंड -9 होगा। देखिए इसे मैं कैसे लिखूंगा, 6x² minus 9x plus 2x minus 3 equals to 0. Now compare, टेक कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन आएगा 3x, तो मुझे यहाँ पे क्या बचेगा 2x minus 3, here common 1, so 2x minus 3, then again common, so you will get 2x minus 3 and 3x plus 1 is equal to 0. Now compare the term, 2x minus 3 equals 0, so you will get what, x equals to 3 by 2, and here 3x plus 1 equals 0, then you will get what, x equals to -1 upon 3. So this is what first 0 and this is what second 0. इसे आप कंपेयर रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हैं जैसे ना पहले किया हुआ था। नाउ सी, now we will discuss how to make quadratic equation when the zeros are given. So suppose if the zeros of quadratic polynomial are 3 and -2, find इक्वेशन। मुझे क्या बोला गया, अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हैं 3 और 2, तो मुझे बताना इक्वेशन क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज व्हाट, x² माइनस सम ऑफ इट्स जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो इक्वल्स टू 0। मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। नाउ सी, मुझे याद है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, जीरोस मुझे दिए हैं, मींस द वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट 3 and beta is what, -2. Now put the values, so you will get x² minus 3 plus -2 plus 3 into -2 equals to 0. Then you will get what, x² minus 3 minus 2 minus 6 equals 0. x² minus x² 3 में से 2 के 1, x minus 6 equals 0. देखिए हमारे पास ये बन गई क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब देखिए जैसे कि ना अभी कुछ बुक्स में आपको कुछ इस तरीके से भी दिया हो सकता है, फाइंड द इफ द, इसमें आपको लिखा हो सकता है क्या, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 3 and 1, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ मुझे दे दिया क्या कि मुझे सम दिया हुआ है कितना 3 और प्रोडक्ट दिया हुआ क्या आपको 1। अब मुझे ये क्वेश्चन को समझना है कि देखिए यहाँ लिखा है सम और प्रोडक्ट, यहाँ लिखा है सब क्या, जीरोस। अगर आपको जीरोस दिया हो तो मतलब अल्फा बीटा अलग दिया है, और अगर आपको ये लिखा है सम एंड प्रोडक्ट तो आपको ये दोनों कंबाइंड मैनर में दिया है। देखिए वैल्यू पुट कीजिए, x² minus 3x plus 1 equals 0, तो आंसर विल बी x² minus 3x plus 1 equals 0। तो हमारी इक्वेशन हो गई। नाउ in this manner our chapter 2 polynomial is completed. Now in the next class we will discuss about the other some important questions of from your refresher, and
जब तक लिए थैंक यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो. थैंक यू सो मच.